These are the various formulas. सर आपका वीडियो नहीं आ रहा. मेरा वीडियो नहीं आ रहा? How about the others? आ रहा है सर. आ रहा सर, आ रहा सर. आ रहा है. नहीं आ रहा सर. नहीं आ ओके, जस्ट अगर नहीं आ रहा तो एक बारी लॉग आउट करके जस्ट लॉग इन अगेन. आ गया. Okay. So the first one was to calculate P, then was to calculate V loss, then was to calculate RGM, and the last one was to calculate drafts. Forward and aft. These were the various formulas that is thing. So firstly we started with waterline number 3. So to calculate waterline number 3, what is the formula for calculating P? TC into MCTC upon LCF. This is for waterline number 3, the P3 formula. Then to calculate V loss, what is the formula? Yes. P into Km by Km W upon initial. W initial. P into Km upon W. So ये हमारा V loss का फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला नंबर 2 जिसे हमने नाम दे दिया. फिर आते हैं RGM पे, that is GM initial minus V loss. That gives us the RGM. और फिर ड्राफ्ट्स कैसे निकालते हैं हम? Hydrostatic draft से. Correct. So initial hydrostatic draft minus mean rise, and mean rise of course is P upon TPC. So these were all the various formulas for waterline number 3. इसमें किसी को कोई डाउट है कहीं पे भी waterline number 3 में? No, sir. Okay. Then we went on to waterline number 4. तो waterline number 4 में हमने क्या किया? हमने RGM से शुरू किया. So यहां से शुरू किया हमने RGM is 0. So this was basically for when will the vessel be unstable. So 4 and beyond, basically. 4 and beyond. We started with this. Then from here we went to this. Okay. Then we came to this. How did we calculate the P? Can I use this formula for waterline number 4 to calculate P? Can I use this formula to calculate P for waterline number 4? No, sir. Yes, sir. Hmm? No, sir. This trim cost is 0, so it all comes 0. So why I can't use this formula here? Sir, no trim cost. No trim cost?
to reach waterline 4 from initial. There's no trim caused. LCF कितना हो गया? Initially कुछ मेरी trim थी. Trim will be 0. Initial waterline number 2, let's say, or 1, I had, let's say, half a meter trim. Then I became even keel. I came to 3. So some TC was caused to reach up to 3. Then from 3, there was no TC caused because my 3 was 0 and my 4 was also 0, the trim. So I cannot use this formula because my TC component will be wrong. Get the point? Yes, sir. Yes. So how did we calculate P in waterline number 4? Is my question to you. Please check. Please check your notes. हमने जो लास्ट न्यूमेरिकल किया था क्लास में, उसमें हमने 4 का P कैसे निकाला? सर वर्चुअल लॉस था अपने पास टाइम पे. वर्चुअल लॉस था अपने पास. हाँ, देन उससे KM अपने पास था और W इनिशियल से P आ गया था. उससे तो खाली वर्चुअल लॉस आया था. P उससे नहीं निकला था. चेक करो. सर उससे ही निकला था वर्चुअल. सर KM माइनस आरजीएम 0 है यहाँ पे, तो सर वर्चुअल लॉस तो अपने को पता है ना सर, वर्चुअल लॉस, और देन वर्चुअल लॉस विल बी इक्वल टू P इनटू KM अपॉन में W इनिशियल. यहाँ से P निकला था सर. So virtual loss was equal to इनिशियल GM. इनिशियल GM. GM. फिर उससे हमें वर्चुअल लॉस पता चल गया. जी सर. उसके बाद वर्चुअल लॉस को हमने इक्वेट कर दिया फॉर्मूले में और इससे हमने P निकाल लिया. जी सर. वो P हमारा 300 आया. करेक्ट सर. उसके बाद हम ड्राफ्ट्स के लिए गए. यस सर. ड्राफ्ट्स कैसे निकाले हमने? हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट से मीन राइज को सब मीन राइज निकाल के. ओके. इनिशियल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट minus mean rise, that is P upon TPC, gave me the drafts forward and aft. That means अगर मैं इनिशियल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट, मुझे अगर किसी तरीके से फाइनल ड्राफ्ट पता है और इनिशियल ड्राफ्ट भी पता है हाइड्रोस्टैटिक, तो मुझे फॉल पता है या मीन राइज पता है. यस सर. यस. और उस मीन राइज को इक्वेट करके मैं P निकाल सकता हूं. यस सर. That means मेरा फॉर्मूला नंबर 1 फॉर वाटर लाइन नंबर 4 is nothing but mean rise is equal to P upon TPC. इससे मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करके P मिल जाएगा. ये मैं कहना चाहता हूं. तो ये मेरा फॉर्मूला नंबर 1 बन गया फॉर वाटर लाइन नंबर 4 एंड बियॉन्ड. ये समझ में आया कि नहीं? आ गया. ओके. सो बेसिकली मुझे इनिशियल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट मुझे इनडायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है. मुझे फॉल दी हुई है, तो इसका मतलब है मुझे फाइनल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में. दोनों के डिफरेंस से मुझे मीन राइज मिलेगा और इस मीन राइज को मैं P अपॉन TPC से इक्वेट कर दूं तो मेरे को P मिल सकता है, जो कि मैंने निकाला, विच वॉज इक्वल टू 300. राइट सर. सो ये मेरा, दैट मीन्स कहने का मेरा मतलब ये है
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बाय दिस होल स्टोरी इज कि अगर मैं यहां से 100 टन का वर्चुअल कार्गो डिस्चार्ज करता हूं तो ये मेरा जहाज इवन कील पे हो जाता है उस न्यूमेरिकल में। और अगर मैं 100 से 2 टन भी या 1 टन भी ज्यादा करता हूं तो मैं इवन कील होके उसके बाद में 3 के बियॉन्ड चला जाऊंगा। दैट मीन्स अगर 101 टन डिस्चार्ज किया होता मैंने वर्चुअल कार्गो तो 3 के बियॉन्ड होता मैं। हाँ जी सर। राइट। यस सर। सो वो पी 101 का मैं कैसे निकालता, वो मैं इस फॉर्मूला से निकालता। ऐसे ही जाता, नो डाउट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट कोई ऐसे केसेस अभी आएंगे जिसमें मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। इज दैट ओके? यस सर। ओके। अब हम जा रहे हैं, हमने 3 कर लिया, हमने 4 कर लिया, बियॉन्ड 4 भी कर लिया। अब बचा क्या हमारा? अब बचा हमारा क्रिटिकल पीरियड। सो लेट अस नाउ कम टू ड्यूरिंग क्रिटिकल पीरियड। दैट मीन्स वाटर लाइन 2 एंड 3 के बीच। सो उसको एक नाम दे रहे हैं हम वाटर लाइन 2.5। वाटर लाइन 2.5 उसको एक नाम दे रहे हैं। दैट मीन्स ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग दिस क्रिटिकल पीरियड, जहाज में कोई एक ट्रिम होगी। अभी जहाज 3 पे नहीं आया, फाइनल ट्रिम 0 नहीं हुई, तो उस वक्त क्या होगा? वर्चुअल लॉस तो मेरा वही का वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं है इसमें। आरजीएम मेरा उस वक्त पॉजिटिव होगा, विल बी ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स विल बी इक्वल टू पॉजिटिव। ड्राफ्ट्स मेरे ट्रिम होगी मेरी, देयर बी सम ट्रिम एंड देयर बी सम फॉर्मूला फॉर द पी। सो ये दो चीजों पे अब हम कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। वी आर नाउ गोइंग टू बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दीज टू फेलोज। समझ में आ गया? Yes, sir. Okay, so take down one question. So we are concentrating on this now. So these types of questions which we are going to come to now, they are called as fall in waterline questions. Fall in waterline. And all these fall in waterline questions, you got to be very careful because you have to suspect. That means you are on waterline, you are going to come to waterline number 2.5 during critical period. That means between 2 and 3. तो हम उसकी बातें कर रहे हैं अब। तो write down the question. Vessel of displacement 6,500 tons. Length 120 meters. HF
2 meters forward of midship, MCTC 110, TPC 15, KM 6.7, kg 6.1, forward draft 4 meters, aft draft 6.2 meters, is floating in a dry dock where the water line is 6.5 meters above the top of the blocks. कहने का मतलब है डॉक वाटर हाइट 6.5 मीटर है. तो लास्ट लाइन क्या बोला आपने? 6.5 मीटर अबव द टॉप ऑफ द ब्लॉक्स. 6.5 above the top of the blocks. Calculate the RGM and drafts forward and aft when number 1, water line is lowered by 1 meter. Second, water line is lowered by another 1 meter. All right. So ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मुझे एक डायग्राम बनाता हूं पहले. Okay. So 4 meters, 6.2 meters, dock water height 6.5. So UKC is 0.3. 0.3 sir. यहां तक it's okay with everyone? Yes, sir. Okay. Now, first part, water line is lowered by 1 meter. तो जब मेरा पानी डॉक का 1 मीटर गिरेगा तो उस वक्त अभी इनिशियल मेरी डॉक वाटर हाइट 6.5, 1 मीटर फॉल, तो फाइनल डॉक वाटर हाइट कितनी होगी? 5.5. 5.5. Everybody agrees on this? Yes, sir. 5.5. So final dock water height will be 5.5 meter. Yes, What sir. will be my aft draft at that time? 5.2. 5.5 5.2. 5.5 सर. 5.5 5.5, sir. Does everybody agree on this? 5.5 होना चाहिए. 5.5. Yes, sir. 5.5. Equally full. 5.5. क्योंकि जब ये 0.3 गिरेगा पहले पानी इस 1 मीटर में से,
तो मेरा आफ्ट टच कर जाएगा। दैट मीन्स वाटर लाइन नंबर 2 आ जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। उस वक्त मेरा डॉक वाटर हाइट जब 0.3 गिरेगा पानी, उस वक्त मेरा डॉक वाटर हाइट 6.2 होगा Yes. एंड मेरा आफ्ट ड्राफ्ट भी 6.2 होगा। एग्रीड? Yes, sir. Correct, sir. उसके Yes, बाद sir. उसके बाद जो भी पानी गिरेगा डॉक वाटर में, वही मेरा आफ्ट ड्राफ्ट भी होने वाला है। Yes, sir. Correct. एग्रीड? Yes, sir. Yes. Agreed. Yes, sir. ओके। सो उसके बाद मैं मैच कर जाऊंगा डॉक वाटर हाइट के साथ। आफ्ट ड्राफ्ट एंड डॉक वाटर हाइट मैच हो चुके होंगे। जो डॉक वाटर हाइट होगी वही मेरा आफ्ट ड्राफ्ट होगा। सो मेरा फाइनल आफ्ट ड्राफ्ट 5.5 होने वाला है। दैट मीन्स वन आंसर आई हैव ऑलरेडी गॉट बिफोर आई इवन स्टार्टेड माई क्वेश्चन। अभी मैंने क्वेश्चन चालू नहीं किया है और मुझे अपना एक आंसर ऑलरेडी पहले ही पता है। Yes, sir. क्वेश्चन ये आ जाता है, क्या मेरा फॉरवर्ड टच करेगा कि नहीं करेगा? दैट्स द मूल क्वेश्चन। और वो मुझे पता नहीं है, दैट आई डोंट नो, कि क्या मेरा बाव टच डाउन कर जाएगा कि नहीं। अगर बाव टच डाउन कर गया तो मैं वाटर लाइन 3 पे पहुंच गया एंड वाटर लाइन 3 का मेरे पास फॉर्मूला है। Yes, sir. लेकिन अगर मैं अगर मैं वो 3 बाव टच नहीं किया और मेरा ये बाव अभी भी पानी में है, हवा में है, तो देन मेरा वो 3 वाला फॉर्मूला मैं गलत हो जाऊंगा मैं टेक्निकली, क्योंकि मैं वो यूज ही नहीं कर सकता। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. सो क्वेश्चन ये आ जाता है कि वाटर लाइन 2.5 का मेरा वो फॉर्मूला क्या है। सो लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर वाटर लाइन नंबर 2.5 टू कैलकुलेट पी। The formula is P upon TPC plus P into LCF square upon MCTC into LBP is equal to fall in water line after contact. Fall in water line after contact or change in draft at the point of contact. This is our formula, the work also called as the long formula. अब मेरी समस्या ये है, let's check the units of this. P is tons. P is tons. TPC is tons per centimeter. Plus P is tons. LCF square meter square. LBP meter
Moment to change trim, ton meter per centimeter. Ton cancel, centimeter goes on top. Ton meter square cancel, ton meter square cancel, centimeter goes on top. So right hand side, the units should be in centimeter. Is this okay with everyone? Units कैसे है? Yes, sir. Yes, sir. ओके अब मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि क्या मैं ये फॉर्मूला यूज करूं या ना करूं, ये तो मुझे पता ही नहीं है. सो सबसे पहले मुझे एक चेक करना पड़ेगा. चेक क्या करना है कि वाटर लाइन 3 तक आने के लिए मेरा पी क्या है, वो मेरा चेक होगा. सो आई नीड टू डू अ चेक फॉर टू सॉल्व दिस एम्बिग्विटी. So check for waterline number 3. Calculate P3. So P3 का फॉर्मूला लिखो, TC in centimeters into MCTC upon LCF. So calculate P3. TC initial trim 2.2 meters, final trim 0. So change in trim 220 centimeter into MCTC 110 upon LCF 60 plus 2 62. So calculate the P3. सर एक बार फिर से समझाएंगे, हम ये वाला चेक किस लिए कर रहे हैं, वाटर लाइन 3 का पी? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे जहाज की अभी ट्रिम 2.2 मीटर्स है. मेरे जहाज की ट्रिम 2.2 मीटर है. 1 मीटर पानी गिरा, 0.3 पे तो टचडाउन पीछे हो गया जब 1.3 गिरा. अब जब बैलेंस गिरेगा 0.7, तो क्या मेरा बाव टचडाउन कर जाएगा या नहीं, ये मुझे पता ही नहीं है. तो ये मैं पता लगा रहा हूं. दैट इज व्हाट आई वांट टू चेक. So 390.32 tons. 32 tons. सर जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में, तो ये चेक का जो पार्ट है, वी नीड टू मेंशन इन द क्वेश्चन. That's right. You will be mentioning that. Check for vessel going all over on the blocks is what you'll write. ये चेक करना पड़ेगा आपको. आगे आप जाओगे, अब देखोगे जब मैं थोड़े से क्वेश्चन में ट्रिक डालूंगा ना, तो कैसे वो आप घूम जाओगे. तो इसलिए यू नीड टू डू दिस चेक. अगर इसको नहीं करोगे तो फंसोगे. सर जो ये फाइनल ट्रिम हमने 0 लिया है, तो इसका मतलब ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि आगे वाला बैठने वाला है आगे अभी से. मैं अभी बैठा नहीं है, अभी मैं चेक कर रहा हूँ. अभी अगर मेरा आगे बाव बैठेगा तो उस बाव को बैठने के लिए कितना मेरा पी होना चाहिए. ओके ओके, इसलिए फाइनल ट्रिम हमने 0 ले रखा हुआ है. इसलिए मैंने फाइनल ट्रिम 0 लिया है फॉर वाटर लाइन नंबर 3 टू डू द चेक. एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में नहीं हो रहा है. तो ये चेक करके सर हमें सिर्फ जीएम निकालना है कि अगर पॉजिटिव आया मतलब तो नहीं, अभी कुछ नहीं. अभी मैं खाली पी निकाल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा. अभी मैं खाली पी निकाल रहा हूँ. अच्छा, इस पी के लिए वाटर लाइन 3 के लिए मेरा ड्राफ्ट क्या होगा वो निकालो. 5.06.
So original या initial hydrostatic draft will be equal to draft aft minus correction, which is trim, into LCF upon LBP. This is the original hydrostatic draft. Draft aft 6.2 minus trim 2.20, LCF 62, LBP 120. So original hydrostatic draft will be equal to 5. 063 sir. 063. This is my original hydrostatic draft. For this 390 ton, the mean rise is equal to P upon TPC is equal to 390.32 divided by 15 is equal to, this is my mean rise, 0.260. 0.260. 0.260 सबका सेम आ रहा है, वो सेंटीमीटर में, देन ही इज कन्वर्टेड टू मीटर डायरेक्टली, तो इसलिए यस इसको माइनस Yes, कर sir. दिया, इसको माइनस कर दिया. सो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट एट वाटर लाइन नंबर 3 is equal to 4.803. 4.803. This will be at waterline 3, the draft forward will be the draft aft, will be the dock water height also. Agreed? यस सर Okay. Yes, sir. Now, for the long formula, get into the long formula and calculate the P and compare it with this P. That means, अगर फॉल होती है तो क्या P बनता है? तो क्वेश्चन ये आ जाता है राइट साइड पे, फॉल इन वाटर लाइन आफ्टर कॉन्टैक्ट क्या होगा, कि पहले 0.3 पानी गिरा एंड टच डाउन हुआ पीछे, वाटर लाइन 2 पहुंच गई, क्रिटिकल पीरियड कमेंस्ड, P कमेंस्ड. यस सर तो अब हाउ मच इज द बैलेंस फॉल इन वाटर लाइन आफ्टर कॉन्टैक्ट? 0.7 Is this okay with everyone? 0.7. एक बार 0.7 होता है. Okay. So ये right hand side है. This is the RHS. So RHS is equal to total fall minus UKC. The right hand side is total fall. Total fall is how much? 1 meter. UKC is how much? 0.3. So how much is the right hand side? 0.70 meters. Convert to centimeter. This becomes your right hand side. कहने का मतलब ये है, पहले 0.3 पानी गिरेगा, उस वक्त कोई P होगा नहीं. There is no P. That is just a free fall. P started only when critical period started. So if
when 0.3 occurred fall, then the P commenced. How much is the balance to fall out of the total fall? So 1 minus 0.3. 7. So 0.7. Convert this to centimeter. This becomes your right hand side, RHS. Is this okay? Yes, sir. Okay. Put the values in this formula. Calculate the P. So this will give you something P plus this will give you something P is equal to 70. Something P is equal to 70. Therefore, P will be equal to something. 195.71. 195.71. 71. Others are also getting the same. सर जैसे इन इक्वेशन में सर ऐसा कर सकते हैं, जैसे p by 15 है तो डायरेक्टली 1 by 15 वाली वैल्यू ले ली 3-4 डेसिमल तक p 0.065 p प्लस, बट सर उसमें हमेशा मैंने देखा सर थोड़ा डिफरेंस आता है सर आंसर में, जैसे वो इसका हमेशा पता नहीं। करेक्ट, वो बिकॉज जब आप क्या होता है कि जब आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लेते हो ना, तो जैसे ही यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन शुरू में ही ले रहे हो, प्लस इसमें भी अप्रोक्सीमेशन हो रही है, तो डबल अप्रोक्सीमेशन हो रही है, तो देयरफॉर यहाँ पे आपका यू विल गेट अ डिफरेंट आंसर इन द सेकंड, ये यहाँ पे डेसिमल में। सर यहाँ पे 0.59 आ रहा है, इतना फर्क है, तो सर ये हाँ, कर सकते हैं या नहीं करें? मेरा 0.53 आ रहा था, तो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग 195.53। तो मैंने 4 लिया तो शायद मेरा कम आ रहा है, आपने 3 लिया तो थोड़ा और कम ऐसा होगा। probably yeah, you're right there. तो इसमें वी आर नॉट सो फिनिकी, इतना हम फिनिकी है नहीं। इसमें अपन एक वैल्यू पूरी भी ले सकते हैं ना? करेक्ट, यू कैन टेक जो आपके उसमें कैल्सी में पूरी आ रही है। हाँ, पूरी आती तो उसको आंसर प्लस करके मतलब ऑलमोस्ट एक राइट तो आएगा, मतलब क्लोजेस्ट वैल्यू आएगी उसमें, तो क्लोजर वैल्यू आएगी, तो एक पूरा का पूरा ले लो, मतलब जो फुल कैल्सी दिखा रहा है 10 डिजिट या व्हाटएवर। ओके सर, ओके। सो नाउ यहां तक इट्स ओके विद एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes. Okay. Now you write down, since 195.71 is less than 390.32, hence what do you conclude? Vessel is still in critical period. ये सबको समझ आ गया ये सेंटेंस? यस सर। इसमें कोई डाउट है किसी को? प्लीज आस्क। सर जब हमने यहाँ हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट निकाला 4.80, हाँ, तो उसका भी मैंने यूज नहीं किया, उसको भी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, बाद में करूंगा। बाकी हमको वहीं पे मालूम पड़ जाएगा ना सर कि अभी तक नहीं पहुंचा, क्योंकि अपना आप ड्राफ्ट अभी तक 5.5 है। हाफ ड्राफ्ट 5.5 है, लेकिन फॉरवर्ड क्या है वो तो पता नहीं है।
हाँ नहीं, लेकिन सर वाटर लाइन 3 में आपका फॉरवर्ड ड्राफ्ट और हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट तीनों इक्वल हो जाएगा ना। करेक्ट। तो अपना आप ड्राफ्ट अगर 5.5 है, हाँ मतलब आप ड्राफ्ट 4.8 होना चाहिए वाटर लाइन 3 के लिए, अभी हाँ 5.5 है, तो इसका मतलब कि हम लोग वाटर लाइन 3 पे नहीं पहुंचे हैं। ओके, उससे भी निकाल सकते हो, वो भी ठीक है, ओके, वो भी ठीक है, बट पी फिर भी निकालना पड़ेगा। हाँ पी तो निकालना पड़ेगा। पी तो निकालना ही पड़ेगा आपको। हाँ तो since 195 is less than 390, therefore vessel is still in critical period. What he is saying is 4.803 is less than 5.5, therefore vessel is still in critical period. That is also accepted. कई लोगों को ये ज्यादा आसान लगता है, कईयों को वो ज्यादा आसान लगता है, both are okay. So since 195 is less than this thing, therefore correct P is equal to 195.71. So P आपका आ गया, calculate virtual loss, calculate RGM. वर्चुअल लॉस कितना आता है? 0.2017। हाँ मेरा 0.202 आ रहा है। 0.202 और फिर RGM 0.80। नहीं 0.398 सर। 0.398 चेक करो जरा। एक पार्ट मेरा खत्म हो गया, अब मैं ड्राफ्ट्स पे आ रहा हूं। मेरे को पी पता है, तो फाइंड आउट मीन राइज। फाइंड आउट मीन राइज 0.130। 0.130 फाइंड आउट TC is equal to trimming moment upon MCTC. Trimming moment is the P into LCF upon MCTC. That is 195.71 into LCF 62 upon 110. So find out TC. 110.30। 110.30. 30। This will be in centimeters. Find out TA. That will be equal to TC into LCF upon LBP. 110.30 into 62 upon 120. .569। TA is, मैं सेंटीमीटर में रख रहा हूं अभी, सर 56.99।
आई एम जस्ट कीपिंग इट इन सेंटीमीटर्स फॉर द टाइम बीइंग. लास्ट में करूंगा मैं इसको TF will be equal to TC minus TA. $53.31. 53.31. All right. Now I make a drafts table. So forward draft, aft draft. Initial drafts 4, 6.2. Mean rise minus 0.13, 0.13. TF/TA. मेरा बाव नीचे जा रहा है, so TF का साइन will be plus, TA का will be minus. TF 0.5331, TA 0.5699. Find out draft forward, draft aft. इसका total should come as equal to 5.50, what I started off with. ये मेरा चेक बनेगा. यस सर, ये आ रहा है सर. अब फॉरवर्ड का निकालो. फॉरवर्ड 3.336. 3.336. नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई. 4.40 आ रहा है. हैं? 4.403. 403. हाँ, अब ठीक है. मेरा आगे का ड्राफ्ट बढ़ेगा बिकॉज मेरा बाव नीचे जा रहा है और पीछे का ड्राफ्ट घटेगा. So that is why. So these are going to be my final draft forward and aft after 1 meter fall of water line. ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा एग्जाम में? 30 नंबर. और अभी हमने एक पार्ट किया है, अभी दूसरा पार्ट बाकी है. So basically what have we done? What have we done in this entire thing? First we started off with a check. The check was for water line number 3. उसका P निकाला, उसका ड्राफ्ट निकाला. फिर लॉन्ग फॉर्मूले में गए, लॉन्ग फॉर्मूले से P निकाला. लॉन्ग फॉर्मूले के P को और P3 को कंपेयर किया. ये कमती आया. सिंस ये कमती आया, इसका मतलब है मेरा बाउर अभी तक टचडाउन नहीं किया है. इसका मतलब ये है बाउ इज नॉट येट टचडाउन. Vessel is still in the critical period. If vessel is still in the critical period, then my correct P is that long formula P, because that is the right correct formula that I've used. उसका मैंने V loss निकाल लिया, उसका RGM निकाल लिया, वो आसान है. अब मुझे ड्राफ्ट चाहिए. एक बार P मिल गया तो मैंने मीन राइज निकाला, मैंने TC निकाला, TF TA निकाला और ड्राफ्ट टेबल में लगा दिया. और ये मेरा रेंज चेक है. इसका ग्रैंड टोटल मेरा 5.5 आना चाहिए. अगर यहाँ पे 5.5 नहीं आएगा, इसका मतलब है मेरा P गलत है. इमीडिएटली P के लॉन्ग फॉर्मूला में चेक करना. एंड फॉरवर्ड ड्राफ्ट ये रहा मेरा. अगर मेरा ये 195 नहीं आता हुआ किसी और क्वेश्चन में, मैं सपोजिंग इसकी आपकी फॉल बढ़ा देता, तो ये मेरा सपोजिंग 450 आता. इसका मतलब है कौन सी वाटर लाइन है? 4 सर.
मतलब 3 के बियॉन्ड है, 3 भी पार कर गई, क्योंकि 390 पे 3 आती है, ये मेरी 450 आ रही है. दैट मीन्स आई एम बियॉन्ड 3, मे बी 4, मे बी बिफोर 4, मे बी आफ्टर 4. गॉट इट? यस सर. Yes, sir. तो अभी पहले ये पार्ट को एब्जॉर्ब कर लो. नेक्स्ट क्लास वी विल डू द सेकेंड पार्ट. ठीक है? प्लीज डू अ रिविजन ऑफ दिस कंप्लीट थिंग, व्हाटएवर वी हैव डन. एक क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए घर में, तो लिख लो. टेक वन क्वेश्चन. या चलो पहले इसको प्रैक्टिस, आप खुद इसी को कर लो. देन आई एम नॉट गिविंग एनी होमवर्क एज येट. अभी रुक जाता हूँ, कल अगली क्लास में दूंगा व्हेन द होल थिंग इज कंप्लीट. अभी पार्शियल हो जाएगा तो देन इट विल बी पार्शियल. अभी जस्ट रिवाइज दिस होल थिंग जो भी हमने करा आज लॉजिकली विद द करेक्ट थिंकिंग. ओके, चलो, सी यू, बाय. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर ये पूछना था सर, लाइक वी आर लाइक फेसिंग प्रॉब्लम इन सीएन सर. You are facing problem in Celestial navigation. okay. What is the problem? Problem is that कि सर आते हैं सर पता नहीं एकदम जस्ट लाइक थ्योरी एकदम रीड करके चले जाते हैं और समझाते लाइक बहुत हार्डली है, कुछ समझ में नहीं आता सर सच्ची में. Okay. मतलब एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक हो, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग एकदम, मतलब सब एकदम लॉस्ट हो गया सर. मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा उसमें सीएन में टोटली. अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है? सर अभी प्रोजेक्शन चल रहा था. ग्रोमिक प्रोजेक्शन चल रही थी सर. उन्होंने लास्ट क्लास लगाई थी सर. आप ना एक बार वीडियो भी देखना उनकी जो डाउनलोडेड है सर. वो समझा रहे थे वही ग्नोमिक चार्ट्स कैसे प्रोजेक्ट कैसे होते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट सर. 1-2 घंटे भी लग गए सर, क्लैरिटी भी नहीं आई हम सबको. ओके ठीक है, मैं उसको रिमूव करवा दूंगा वो लेक्चर को. प्रोजेक्शंस करवाया था. हाँ जी सर. इट्स मेनली इट्स की सर वो समझाने का तरीका है ना सर उनका, थोड़ा वो फास्ट बोलते हैं, खुद ही बोलते रहते हैं सर. जैसे जी लैट जी लॉन्ग, तो उनके माइंड में तो सर बिल्कुल क्लैरिटी है उस चीज को लेके, तो वो बिल्कुल ज्यादा आगे फास्ट भाग सकते हैं. हमें सर वो थोड़ा टाइम गैप आ जाता है तो समझ नहीं पा रहे सर. You're talking about the May batch, right? Yes sir. May batch, you're Yes, only sir, talking both the about the batches. Saturday. You're talking, no, in June batch it would not have been done, this topic. Yes, जून sir, का yes, नहीं sir. हुआ. June Sir, batch May it का would हुआ not है, have been sir. done. This is only May batch and only on Saturday it would have been done. Yes sir. Saturday So वाला we are जो only talking about Saturday class, correct? सर इन Yes, sir. जनरल बोल रहे हैं सर, मोस्टली जो थ्योरी के Because टॉपिक्स हैं सर वो please वाला. एक मिनट. Try to understand one thing. The June, the May, and see, the thing is the May batch and the June batch combined is going to run Monday to Friday. Okay, the Monday to Friday, the syllabi is going to be great circle, it's going to be numerical, it's going to be all that. It's not going to be theory. Okay. Yes sir. All right. For the May batch, for Saturday only, that is the projection only. If you have not understood, I'm going to stop it. Okay, if you have not understood it, but it is not going to continue during the week. आज वो नहीं होगा. It is Monday to Friday is going to be a separate schedule, which is great circle, which is separate topics. That is numerical based. There's going to be no theory. ओके सर. बट सर जब लेक्चर अगर सैटरडे को लगा भी रेस्ट नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट बच्चों को समझ में तो आना चाहिए. लाइक I've got your point. I've understood your point. I'll take care of that. I'll take care of it. ठीक है? But Yes, sir, Monday to Friday is only going to be numerical. It's not going to be. There's no room for any theory right now. So it's only on Saturday that I had put which is a projection class from the earlier topic which was left. So वो मैंने डाला था. अगर वो नहीं समझ आया है, no issues. It will be repeated. And also, sir, on the timetable, sometimes it is like one subject for three lectures. It is very lengthy sometimes. Okay. Like 3 lectures continuously. Okay. Yes, sir. This continuation of same subject for 3 or 4 hours is a